Assalamualaikum everyone, welcome back to Babay On Wheels. Now I have some explanation to do because आप लोगों ने देख ही लिया कि मैंने नया प्रोजेक्ट लिया एंड इट्स अ रस्ट बकेट उसका छत भी कटा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो मैं क्या थोड़ा सा मैं ज़रा एक्सप्लेन कर लूँ. सो बेसिकली ड्यूरिंग द लॉकडाउन आई हैड नथिंग टू डू, तो मैंने कहा चलो यार ज़रा देखते हैं सिचुएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस गाड़ी का जो है ये मुझे सामने आई, ये कराची में थी एंड मैं देखा इसके ऊपर काफ़ी जंग से बुरा हाल था, फ्लोर भी नहीं था, छत भी कटी हुई थी. तो मैंने कहा यार अब ऑलरेडी इसके साथ इसका बलात्कार हुआ है, सो माइट इज़ वेल अगर मैं फर्दर करूँ तो कोई माइंड भी नहीं करेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर आप ओरिजिनल एक चीज़ लोगे तो आप उसको ओरिजिनली रिस्टोर करते हो. ये मेरे दिल के अरमान निकालने वाली गाड़ी है. सो इसके साथ मैं ये करूँगा कि बेसिकली आई एम गोइंग टू कीप द छत ऑफ. आई एम गोइंग टू आई हैड ए कन्वर्टेबल बहुत अरसे पहले, बट आई हैवेंट हैड अ कन्वर्टेबल इन एजेस. तो मैं कहा चलो यार अब अपने ज़रा शौक पूरे करें. देखें अब इसके छत ऑलरेडी चॉप हुई हुई है, फ्लोर इसका है ही नहीं, बेसिकली रस्टेड तो क्या है ही नहीं, एंड काफ़ी जगह से इसका रस्ट निकला हुआ है, बुरा हाल हुआ है. तो डॉक्यूमेंट इसके पूरे हैं, हर चीज़ पूरी है, टोकन टैक्स हर चीज़ पेड है, मेरे नाम पे गाड़ी है, तो वाई नॉट राइट. सो देखते हैं अब इसका क्या करना है. तो मैंने सोचा आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू गाइज कि मैंने लिया क्या है और क्यों लिया. सो आई विल बी अटैचिंग अ लिटिल बिट ऑफ पिक्चर्स, यानी थोड़ी सी तस्वीरें आपकी यहाँ पे आ रही होंगी. तो दीज आर जस्ट आइडिया, सो लेट मी नो विच इज़ योर फेवरेट. आई एम गोइंग टू नंबर देम सो दैट आप कमेंट करो कि जनाब जी कौन सा नंबर विच शुड आई गो फॉर. एंड या साथ में ये है कि दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी interesting project because this is a dual project and I'm not going to name the person, but that person knows. So yeah, so it's like a milli bhagat of me and that person, so I'm sure that we're going to have a lot of fun with this. And yeah, so let's see क्या होता है. अब मैं इसकी तरह unpacking करूँ because yeah, there's a lot of stuff to do.